स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत ही ज़रूरी पोर्शन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज इसके ऊपर काम करेंगे एंड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस वीडियोस आई विल ट्राई टू फिनिश अप ऑल द थिंग्स टुगेदर। तो पहला है फैक्ट्स अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ में आएंगे। सो दिस इज़ वेरी इजी। सो आपको पहले जानना है व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक वेल बीइंग, क्यों कोई कंट्री इज गोइंग अप एंड सम कंट्रीज आर गोइंग डाउन and why the socio-economic imbalance is occurring. Okay? इन वीडियोस में इसी का खोज करेंगे। कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं जो बाद में बहुत हैंडी रहेगा। एक होता है जीडीपी, जो आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जैसे साउथ कोरिया का है 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, नॉर्थ कोरिया का 40, यूनाइटेड स्टेट्स का 16.24 ट्रिलियन डॉलर्स, China get 12.26 trillion dollars, 75% of the US GDP. So this is the way of saying the thing. Okay, GDP per capita means total number of people divided by the total population. यहाँ पर में अगर देखा जाए तो देखिए सभी चीज़ों में साउथ कोरिया is 367,000, 1800 in the North Korea and 560,000 in the United States and 14,300 ज़्यादा लोग होने की वजह से ये हो रहा है. Okay. So population plays a very important role. GDP per worker as a productivity measure कैसे लेंगे? GDP to the number of workers. So GDP and the number of workers both goes higher at the same point of time. Labor force क्या है? Number of people who are actually working right now. Participation rate है share of the working age population का कितना percentage अभी labor force के साथ काम कर रहा है. GDP का growth rate क्या लेंगे with respect to time? पहले the log of the GDP value and differentiate with respect to time. Okay, so इस तरीके से भी numerically way में भी हम लोग लिख सकते हैं. Growth rate of GDP per capita, it's definitely analogously one of the very important variable तो है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे बाद में. कुछ प्रिलिमिनरी और कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे. रूल ऑफ 70 क्या है? सपोज दैट कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. मैथमेटिकली इट मींस दैट the instance that GDP of 2013 is GDP of 2012 into 1 plus 5, so percentage के हिसाब से है, so 1.05 of the last year. Okay. Stylized facts क्या है? Informational and verbal description of some phenomena. बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे. And economic development and the theories are very much dependent on this. This is one stylized structure. So stylized fact one, there is enormous variation in the per capita income across the country. 212 देश है, हर एक देश में pattern wise systematic changes are there. द साइज ऑफ द इकोनॉमी, ये अगर हम लोग कहेंगे ये भी फैक्टर रहता है. इंटरनेशनल कंपैरिजंस रहेंगे. परचेजिंग पावर पैरिटी रहेगा, जो अलग अलग देशों के लोगों का परचेजिंग पावर का कंपैरिजन है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी डिफर करता है, जैसे जापान में लोग ज़्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर हायर देन इन फ्रांस. परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पहले ही बात कर चुके हैं. So PPP of $1 should exactly be half of the GBP. So depending on the purchasing power and how the comparison of this thing is there. So लेकिन काफी कुछ चीज़ें में non tradability भी होता है, means A cannot be changed with B. So there is one diagram I have taken here. So world population in the countries and less than 2%, GDP wise कैसे improve होता है. So obviously population plays a crucial role. Population role are very important. Cumulative distribution of world population by GDP per worker अगर लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, सो जीडीपी पर वर्कर इन द यूएस इज एक्चुअली कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. यहाँ पर में काफ़ी स्टीप स्लोप था और यहाँ से थोड़ा रहा, लेकिन आफ्टर दिस 40 जीडीपी पर वर्कर के बाद इट इज ऑलमोस्ट स्टिल सिचुएशन हॉरिजॉन्टल लाइन. सो वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द जीडीपी पर वर्कर अगर 1960 से 1995 तक का देखेंगे तो हमें देखेंगे चाइना एंड इंडिया ग्रू फास्ट. साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर demonstrate fast growth as possible. This is called the East Asian tigers also. Next, stylized fact 2, rates of economic growth vary substantially across the country. तो साउथ कोरिया ग्रो फास्ट एट मेकिंग इट अ मिरेकल, लेकिन जिम्बाब्वे, वेनेजुएला में बहुत कम है. सो कंट्री वाइज ग्रोथ रेट भी चेंज होता रहता है. एक और ग्रोथ रेट जनरली इज नॉट कांस्टेंट ओवर टाइम, समय के साथ साथ ये चेंज होता है. बिफोर 1870 में ये 0.2 था. रैपिड एक्सेलरेशन इन द 20th सेंचुरी. सो चाइना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ फ्लक्चुएशन.
Okay, so a country's relative position in the world, distribution of per capita income भी not immutable and sometimes changes. जैसे अर्जेंटीना का 3 सालों के हिसाब से this is 1800, फिर उसके 130 साल बाद क्या हुआ, और 71 years का पैटर्न यहाँ दिया हुआ है. Okay. Real rate of return of capital stays relatively constant over time. किसी इसी से ही टोटल कैलकुलेशंस आते हैं. एंड जैसे मान लीजिए लेबर शेयर, अगर हम लोग का कोई भी फैक्टर और प्रोडक्शन में लेबर शेयर ज़्यादा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लेबर शेयर कम होने की वजह से देयर विल बी एन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी लेस मनी अर्नड, and as a result of that less consumption, and as a result of that less jobs, and as a result of that again unemployment will be created. Okay, this there's a small diagrammatic representation we have over here. So one or two different cases. Another stylized fact we have: growth is an input of the growth of the volume of the international trade are closely related. जितना हम लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना, सो ओपननेस ऑफ द कंट्री. In the recent time, India is also doing many of it. Korea 70% by BBP and official exchange rate is 99%. Luxembourg, Singapore, Hong Kong in local trade volume 150% of the GDP. So that's it for this video. In the next one, we will be discussing more about the growth systems in development economy.